सब तो कोने रखे रहे। दे ले, पोछा जा रहा है। तुझे काम का तो पता नहीं, कम बढ़ाना बहुत इनका अच्छे से करे आता है। जाके हम हाँ बहुत अच्छा तेल ये कर रहा तो है ना। तनी कैसे ले रहे हम मई चाय एक साथ दवाई खाए तो कहीं पी ले करी। अरे गिर गया लाइट लेवा भाई खेले तो नुकसान हो। हटो जाओ बैठो। तो पहले पी लेना चाहिए कि इनके मुंह पे तेल लगा नहीं, पहले वो कर लेना, घुसुर जा कोने में घुसुर, नहीं तो कोने में पहले घुसुर जा, कोने पहुंच जाबू तू या हाँ। एकदम नीचे धरे रहे। नहीं हम तो हाथ से बिस्तर बनाई दे हमारा ऐसे पड़ा रहा है। तो ये सोआ का करे देखी ना फिर जौन तनी बुझान पी गया आ तो का पी ले तू का ग्लास में कस के धरे बाटू। तो गद्दा तो का सब तो लाभ का हुआ तो सोबे नहीं करते गरमत के सही गद्दुआ पे हम सोई थी तो देखा था है। एक पंखा और लगा ले भाई 10 दिन में गर्मी आए कूलर ले ये देखा कूलर ना है पंखा लगा भगवान के लिए सेट जा तू हो जा जा उनका धोई के फिर दूसरा ठीक अजय हो गंदा अरे है। ऐसे दीवार वाला पंखा लिया था जो बोलता है ये लगा दो ऊपर तो हुक्का ही नहीं कोई एक का रुका एक खुला हो क्या तरह ये बात हो क्या काम का तो पता नहीं कब बढ़ाना बहुत
स्वागत है अर्चना, स्वागत है ओझा जी। राधे कृष्णा। और बताओ, खाना पीना हो गया अर्चना? धरोहर बहन सो ओझा जी स्वागत है। अर्चना, सबका स्वागत है, धन्यवाद। धरोहर बहन दोनों आईडी लगा दो। पागल हो गया है। पागल है ये। मारी पागल मत बोला करो ना तुम। और बताओ धरोहर बहन, अर्चना बहन, खाना पीना हो गया? राधे कृष्णा। अर्चना, रिंकी दोनों को मैं बोल रही हूँ
किसी फालतू लोगों को मॉड्यूलेटर मत बनाना, ब्लू ज़्यादा मत देना, जिसको दी भी हो सब हटा दो। अपने जो पहचान की हैं इन्हीं लेडीजों में ब्लू रहने दो। और कोई जेंट्स फालतू आए तो उसको ब्लू मत देना। अभी देखो देखो पवन का चैनल ख़राब कर दिया कोई, ब्लू के ही वजह से। जिसके पास जो मॉडरेटर बन जाता है वही कर सकता है ये सब काम। अपना चैनल सेफ रखने के लिए सब किसी को भी मत देना ब्लू। अब ब्लू देना भी तो उस ज्वाइनिंग कर लिया कि तुरंत जाने लगेगा तो उससे ब्लू ले लेना। मान लो नहीं बताया चला गया तो क्रोम पे जाके ले लेना। बताओ, जब से मैं पवन का सुनी तब से तो मेरा दिमाग ही खराब पैर उधर कर दे। मेरा दिमाग ही खराब, बेचारी इतना मेहनत की किसी को। अभी भी रोज ऑप्शन चेंज हो रहे हैं मेरे में तो आजकल पता नहीं, कभी कभी नहीं है। हाँ हो जाता है ऑप्शन चेंज, मेरे में भी होता रहता है। पहले लॉगिन पे जाना पड़ता है, अभी यूट्यूब पे से जाती हूँ। ऐसा बार बार ऑप्शन चेंज हो रहा है, हो रहा है। वो नंबर दो अपना तो बताऊँ कल तुम्हें कि कैसे चालू करते हो, तो दूसरे तरह बताऊँ चालू करो ऐसा। नंबर तो तुम्हारा मेरे पास है नहीं, नहीं तो बताती कि कैसे कैसे चालू करना है। वो कई ऑप्शन से चालू होता है, एक ही तरीके से नहीं। मेरे में भी एक दिन चला गया तो मैं सोची कैसे, तो मेरी लड़की बताई ऐसे ऐसे, फिर से लॉगिन करके दूसरा दूसरा ऑप्शन से कर देती है चालू। अभी देखो यश बहन का बेचारी का उसका 2 बार लाइव बंद हो चुका है। ऐसे कितनी देर से मेरी आईडी खाली है, किसी और लाइव में भी यही लगाया लाइव चालू। हाँ हो जाता है, नहीं होता वो कुछ सिस्टम में 3-4 दिन से एज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो जाती हूँ तो प्ले लिस्ट से जाती हूँ, और ज़्यादा देर तक एड नहीं आता तो फिर से अंजू बहन स्वागत है। यार तुम पैर उधर कर क्यों को सर पे चढ़ाए हो, मार दूंगी भाई। पैर दर्द कर तो प्ले लिस्ट से जाती हूँ। जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है नहीं आता तो फिर से निकाल के प्ले लिस्ट से आती हूँ तो आता है। लेकिन अब इतना इतना आम लोग रहते हैं कि 1 घंटा में 2-3 बार ही कमेंट करते हैं आके, तब इतना कौन प्ले लिस्ट में निकाल के लेके जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसी अच्छा तो अपना नंबर दो मुझे, तो मैं कल आपको बताती हूँ कैसे चालू करते हैं, दूसरे तरीके से बताती हूँ। इसी में दे दो, चला जाएगा ऊपर, मैं ले लूँगी स्क्रीनशॉट। मेरा भी ऐसे 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं हो रहा था तब दूसरे तरीके से किए। हाँ लेट हो गया, आईडी दूसरी आईडी खाली थी, लेकिन मैं थोड़ा चली गई फर्स्ट फ्लोर पे, एक जन बुला ली तो बच्चे लोग को बोली पूनम की लाइव है लगा देना, तो यही आईडी लगा दी मेन वाली। सपोर्ट आईडी दोनों पड़ी, यही मोबाइल 2-2 3-3 कोई लगाई ही नहीं। अब उनका 1 घंटा हो जाता तब चलाती, तो 10:30 बज गया मुझे लाइव चालू करते। अब पूनम का हुआ पूरा तब लगाई, जो कि आईडी घर में खाली पड़ी थी यही लगा दिए बच्चे लोग। तो चलो इसी से कर दो। पूनम बल्कि बोली दीदी अपना लाइव नहीं चालू की क्या। मैं बोली कैसे चालू करूँ, ये आईडी आप में लगी है, अब निकालो तो चालू करूँ। और आईडियाँ जो खाली हैं घर में रखी हैं उसको कोई लगाए ही नहीं बच्चे लोग।
मगज मारी है। देखो खुशी आती है कि नहीं, खुशी मिश्रा। ठीक है, ठीक। हाँ आगे। हाँ हो गए। हाँ ले ली, ले ली, ले ली। ठीक है। दोपहर में 10 बजे। कितने बजे लाइव चालू करती हो? 11:30 बजे। साढ़े 11 बजे फ़ोन करूँगी मैं। तो वीडियो कॉल तो बताओ, दूसरे मोबाइल से पे बात करना और इसमें लाइव चालू करना, जिससे लाइव चालू करती है तो बताई जाएगी। एक एक बताऊँगी ऑप्शन, यही यही करो तो हो जाएगा। बिना ऐड का पॉइंट नहीं मिलता होगा ना? आज खुशी मिश्रा का कहानी सुनोगी रिंकी? आज मैं उनकी बात ही दिन भर मेरे दिमाग में गूंज रहा है। आज मैं आईडी खाली थी, लेटी थी, तो बोली खुशी बहुत दिन से नहीं आ रही है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हाल चाल है? गई थी 1 घंटा उनको सपोर्ट। बोली जानती हो श्रद्धा दीदी, मैंने आपको एक दिन 5 घंटा रात में आईडी लगा के ऑन करके दिया था, आपने मुझे 2 घंटा दिया, इसी गुस्से से मैं आपके लाइव में नहीं आई। आप बोलो कुछ। कमेंट चुप कर रही हूँ, लेकिन कमेंट मुझे जाना है एचपी गैस का क्या पावती लानी है, क्या है। मैं इसीलिए मुझे गुस्सा लग गया, वही मैं मैसेज की, लेकिन वो चली गई बंद करके, म्यूट करके। जब उनका मोनो चैनल होने का था तो बोली श्रद्धा, और मुझे बता, मेरे लाइव में आके मुझे बताई होती कि दीदी मेरा 3 घंटा आप नहीं दी, तो मैं जाके उनको दे देती। मुझे पता ही नहीं था, जो से दिख रहा था, तो मैं भी 2 घंटा दी, मैं भी दे दी। मैं वही बोली, मैं बोली खुशी बहन तुम्हारा मोबाइल गांव जाने से पहले बोली मुझे वॉच टाइम की जरूरत है दीदी, मैं 3 बजे 2 आईडी लगा देती थी, 6 बजे निकालती थी, 4-4 6-6 घंटा लाइव आईडी लगी रहती थी। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे गुस्सा आया तुमने मुझे आके, मुझे तुम 2 ही घंटा देती थी, मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया। और तुम्हें गुस्सा आ गया एक दिन तुम दे दी तो। मैं कम से कम 10 दिन तुम्हारे लाइव में आईडी 5-5 6-6 घंटा चली है मेरी दोनों आईडी। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे देखो थोड़ा इनका। मैं 2 घंटा मुझे नहीं पता था, नहीं थी, इसी गुस्से से मेरे लाइव में नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा, मैं साफ बता दे रही हूँ श्रद्धा दीदी, इसीलिए मुझे गुस्सा लग गया मुझे। अच्छा, वही मैं सोच के पहली बात आएंगी, नहीं आती तो मैं बताती कि बहन
मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया कि खुशी को मैं 6 घंटा दी, खुशी मुझे 2 ही घंटा दी, वो भी तुम तो 1 दिन दी, मैं तो 10 दिन दी, मेरा जोड़ा तो कितना हुआ। लेकिन इतना अगर हम एक दूसरे की लाइफ में जा रहे हैं आ रहे हैं तो इतना घंटे 2 घंटे मैं सोचती नहीं, रात में लगा दी हूँ, सो गई हूँ, उसका क्या जोड़ना, कभी ज़्यादा हो गया तो कभी कम हो गया। अर्चना है इतना दिन से, आज 1.5 साल साल भर से जुड़ी हैं, पूनम है, आप लोग को, आपको भी पता होगा कि अगर आप लोग बता दोगे कि इतना मैंने दिया है तो मैं उसको दे दूंगी। मुझे नहीं पता रहे, अगर मैं पूरा नहीं दी हूँ तो समझ लो मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कितना दिया है मुझे। ये देखो खुशी का थोड़ा मैं सोचती ही रह गई काफ़ी टाइम तक। संकोच भी इंसान को नहीं लगता कि दीदी तो मुझसे कभी नहीं बोली। उनको इतना बता देती थी, खुशी तुमने देखा था मैं 3 बजे तुम्हारे लाइफ से इतना भी बताई थी कि 2 आईडी लगाई थी, 6 बजे निकाली थी, 2 आईडी 3 घंटा चलेगी, 6 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, अभी 1 दिन नहीं, कम से कम 10-12 दिन तक लगाई थी उनकी लाइफ। मुझे कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दी थी। ये आओ या मत आओ, गुस्सा हो अपने घर पे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमारी खुद ही तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं खुद ही सोचती हूँ कोई ज़्यादा मुझे ना दे, मैं नहीं दे पाती इतना। मोबाइल की कमी नहीं है, आईडी की कमी नहीं है, लेकिन बैठ के सपोर्ट तो करना होता है, देखना तो होता है। ये कौन बाथरूम में है, किचन में है रे अभी तक? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दूध पी आता है ना घंटा तक। कुड़िया को देते तो पिथुआ तेल।
एक पुड़िया तेल लेके आओ, सब तो फ्राई मेरा।
अंजू बहन लाइक बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अरे हमार घूंघट वाली पढ़ाई बहन आ गई। राधे कृष्णा जय श्री कृष्ण। और पांडे बहन खाना पीना हो गया? और पांडे बहन खाना पीना हो गया? अर्चना बहन, पांडे बहन, अंजू बहन, रिंकी बहन, धरोहर बहन सो गई क्या लग रहा है आन करके? सोने का टाइम ही है, 12 बजने वाला है। नींद तो लगता ही है, 11:30 बज गया। ये बेटी आज फ्री फ्री मेरे पास कचरी वाके आज रहा जैसे निधि नहीं लगती जब तो दर्द भी होता। दीदी कर रही कुछ। मम्मी का पैर पे चढ़ गया। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? मेरा पैर दुख रहा है ना, मैं अभी नहीं कर दूंगा। तेरा 24 घंटे दुखता रहता है। और पैर दुख रहा है इसलिए मैं चल नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं फिर लेट गया। अच्छा, अभी 25 बार नीचे ऊपर करना हो तो नहीं पैर तेरे दुखे। कुछ काम बोल दो पैर दुखने लगता है। कभी ना कहीं का। जल्दी तू रहने दे, तू रहने मम्मी का दे, पैर पे चढ़ दे। तू रहने दे ना, तू अब मत बोल। दीदी कचर देगी कि नहीं कचर देगी तू मत बोल, बस तू अपना सो। जय माता की। बाहर निकलता रही लड़का सुन रही। 25 बार नीचे ऊपर करने से इसको कुछ नहीं होता। हाँ 25 बार नीचे ऊपर करने से इसको कुछ नहीं हाँ होता। तब मतलब एक बार जही किताब ले तो एक बार जही दोस्त पार्टी ले फिर एक बार जही असाइनमेंट ले। बाय बाय रिंकी बहन, बाय बाय।
पंजों पंजों। अच्छा दर्द हो रहा है पैर। ठीक है रिंकी बहन, ठीक। कल मैं आपको 10 बजे कॉल करूँगी, 10:30 बजे के लगभग। वही 10 10:30 बजे के लगभग बताती जाएंगी, जैसे बताते जाएंगे वैसे चालू कर लेना, समझ में आ जाएगा। सुबह भी सर्विस नहीं आती हैं, उनको रात में खुद ही चालू कर रही हैं। कल दीपा भी नहीं आई थी, आज देखो आती है कि नहीं आती। इन लोगों की सुबह की लाइव रहती थी तो आईडी खाली रहती थी तो लगा देती थी, अब नहीं आती है कहाँ इतना। रात में मेरी ही लाइव चलती है, सर्विस बोली दीदी मेरे में आईडी सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करूँ, मेरा खुद ही लाइव चल रही है। अब जो आईडी है उनके में लगा दूंगी, वो भी अपने में नहीं, मेरे में नहीं लगाएंगे तो मेरा कैसे होगा सपोर्ट। चलो उनका मोनो हो जाए फिर आएगी करेगी सपोर्ट, पूरा पंजा तक पैर के पंजे तक करते हैं बस। अच्छा दीपा का चैनल मोनेटाइज हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। दीपा का चैनल अच्छा हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा तो लाइव नहीं चला रही है क्या? लेकिन आज मैं उनका सुबह लाइव देखी थी। चलो हो गया, अच्छी बात है। उनका सर्विस का भी शायद ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़े बहुत बचे, तो बंद हो गया था ना इसे लाइव, ये नहीं तो अब तक हो गया होता। अरे यस बहन बेचारी फंस गई हैं, उनका तो हाथ मोनो भी हो गया है फिर भी फंस गई हैं। ज़्यादा उनका भी नहीं है, 2-3 घंटा उनकी लाइव बंद हो गई। पंजा का चल, पैर के पंजवे तो बैठता है, दर्द होता है। चलो परसों तो उनकी लाइव चली। अच्छा कल ही परसों दिए थे क्या मोनेटाइज के लिए? 2 ही दिन में जो बड़ी जल्दी हो गया।